Welcome back, my dear students of grade 6. In the last video, we have studied about the second realm, that is the hydrosphere. And in that video, we have also studied about the hydrological cycle, that is water cycle. And today's video, we will study about the next realm of the earth, that is atmosphere. Our earth is surrounded by an envelope of air called the atmosphere. हमारी अर्थ के आसपास एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, envelope of air, that is known as atmosphere. The height of the atmosphere estimated to be about 10,000 kilometers from the earth's surface. This thick blanket of air is held close to the earth by its gravity. और ये हमारी अर्थ के पास क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल पावर है जिसने इस ब्लैंकेट ऑफ एयर यानी एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ बांध रखा है. दैट्स वाई वी हैव द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ. इट इज़ डेंस नियर द अर्थ सरफेस एंड ग्रेजुअली बिकम्स थिनर मूविंग अवे फ्रॉम द स्पेस. अर्थ के आसपास तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, पर जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है. लेट अस मेक इट क्लियर फ्रॉम द डायग्राम. स्टूडेंट्स, सी इन दिस डायग्राम, दिस इज आवर अर्थ, क्लियर, एंड द blanket of air that surround our earth, that is known as atmosphere. Why it is surround our earth? Because our earth has a gravitational power. That's why we have the atmosphere near our earth surface. Clear? Next is composition of air. अब देखेंगे ये हमारी एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं. क्लियर? प्योर एयर इज एन ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस. जो हमारी एयर होती है, अगर देखें तो ऑर्डरलेस मीन्स उसकी कोई स्मेल नहीं होती, कलरलेस कोई कलर भी नहीं होता, टेस्टलेस टेस्ट भी नहीं होता. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. हमारी जो एयर है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. डिफरेंट प्रोपोर्शन मीन्स सबकी क्वांटिटी अलग अलग है, सेम नहीं है, इंक्लूडिंग वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. और एयर में वाटर वेपर्स भी हैं और डस्ट पार्टिकल भी हैं, मीन्स डस्ट भी है और वाटर वेपर्स मीन पानी भी है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच अकाउंट फॉर 99% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर. एयर में सबसे ज़्यादा गैसेस कौन सी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गॉन, नियॉन, हीलियम, मीथेन, एक्सनॉन, ओजोन, क्रिप्टॉन एंड रेडोन आर द रिमेनिंग गैसेस. ये बाकी गैसेस हैं जो एयर में हैं, विच शेयर 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर. और जो सिर्फ 1% है, सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज़ 99%. वाटर वेपर्स एंड वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट अप टू 12 किलोमीटर ऑफ द एयर. जो एयर से कि जो 12 किलोमीटर तक है, यानी अर्थ सरफेस से हम 12 किलोमीटर तक जाते हैं तो वहाँ तक वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स हैं. पर जैसे जैसे हम हाइट पे चले जाते हैं तो इनकी जो प्रपोर्शन है एयर में कम हो जाता है. नाउ मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. डियर स्टूडेंट्स, सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द एयर. द which gas is the most in the air? That is nitrogen and oxygen, that constitute about 99% of the total volume of the air. And these are the argon 0.90 and other gases 0.17, carbon dioxide that is 0.03%. But the main gases are nitrogen and oxygen. Clear, students? The composition of the air. Now we will study about the structure of the atmosphere. Structure of the atmosphere. The temperature changes alternately
as we move up the atmosphere, this creates a layered structure of the atmosphere. The 5 major layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and the exosphere. See in this diagram. This is the structure of the atmosphere. It is divided into different layers, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere, and these are divided according to the temperature, because as we go higher and higher, temperature decreases, and according to that we divide the different layers of the atmosphere. Clear, students? Dear students, now we will study the different layers of the atmosphere one by one. The first is troposphere. This is the lowest layer which extends up to the height of 18 km at the equator and 8 km at the pole. In this layer, the temperature falls with the ascent of the natural lapse rate. It contains dense gases, water vapors and dust particles. Hence, all weather activities like cloud, storms, rain, snow occur in this layer. It is the only part of the atmosphere which supports life. At the outer boundary of this layer, the temperature falls to minus 58 degrees Celsius and after that it starts rising. This layer 18 किलोमीटर तक फैली हुई है from the equator and from the poles 8 किलोमीटर. Clear? And temperature, इस एरिया में जो टेम्परेचर है ascent with the falls with the natural lapse rate. What is the natural lapse rate? क्या होती है कि rate of decrease in the temperature with the increase in the altitude. जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है. That is known as natural lapse rate. और इस एरिया में गैसेस भी हैं, वाटर वेपर्स भी है और डस्ट पार्टिकल्स भी है. और जो भी आप क्लाउड्स या स्टॉर्म्स देखते हो, रेन आती है, स्नोफॉल होती है, सभी वेदर एक्टिविटीज़ इसी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं. इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट्स लाइफ. तो इस कारण ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि सभी वेदर एक्टिविटीज़ यहीं पर होती है, तो ये वाला पार्ट जो है एटमॉस्फेयर का हमारी अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करता है, जिस कारण से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. एट द बाउंड्री ऑफ दिस लेयर, जैसे ही ये लेयर फिनिश होती है, नेक्स्ट स्टार्ट होती है, द टेम्परेचर फॉल्स टू माइनस 58 डिग्री और उसके बाद वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है. क्लियर? सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर. The layer above the troposphere extended from the 18 km to 50 km is called the stratosphere. Troposphere से जो next layer है, जो 18 km से 50 km है, that is known as stratosphere. We will make all the layers of the atmosphere clear with the help of diagram. Mesosphere, the layer between the height of 50 km to 80 km in the atmosphere is called mesosphere. Next layer after the stratosphere, that is known as mesosphere. Here the temperature falls to minus 100 degrees Celsius, which makes the coldest zone in the atmosphere. जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम हो जाता है माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, जिस कारण ये एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट जोन बन जाता है. सी दैट all the layers are divided according to the temperature. कहाँ पर टेम्परेचर कितना है. Next is thermosphere. The layer above the mesosphere is known as thermosphere. It is the zone of high temperature. The lowest portion of the thermosphere that lies between 100 km to 400 km is called ionosphere, and it is called so because it contains electrically charged particles called ions. इस एरिया को आयोनोस्फीयर क्यों कहते हैं? जहाँ पर ज़्यादा आयोन्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयोन्स मिलते हैं, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन. और जो आजकल आप रेडियो कम्युनिकेशन मीन्स मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो या इंटरनेट होता है, दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस आयोनोस्फीयर. नेक्स्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर. It is the outermost layer of the structure of the atmosphere and mixes with the outer space. It has an altitude above 700 km. It is the last और outermost layer है एटमॉस्फेयर की. इसके बाद
जो हमारा एटमॉस्फेयर है स्पेस के साथ मिक्स हो जाता है और ये कहाँ तक है 700 किलोमीटर हाइट तक है। क्लियर? नाउ मेक इट क्लियर दैट all the layers with the help of diagram. These are the different layers of the atmosphere. First is the troposphere, that is near the earth surface, and here the temperature falls at the rate of natural lapse rate. Clear? And all the weather activities occur in this layer and it supports the life on the earth. And next layer is stratosphere, that lies above the troposphere. After that mesosphere, clear that lies above stratosphere, and here temperature falls to -100 degree Celsius and it is the coldest zone in the atmosphere. Now this is the thermosphere, very important also, because all the communication system that is possible in this atmosphere, because this atmosphere, this layer of the atmosphere contains the electrically charged ions, that is why it is also known as ionosphere. Or last is the exosphere. After that the atmosphere get mixed with the space. Clear, students? Dear students, now this is your activity time. You have to fill this activity and see this diagram. There are the interactive spheres. Clear? You have to name all these spheres in the comment box. Clear that? And you also have to fill that in your book. I hope all of you understand about today's work, that is the different layers of the atmosphere. In the next video we will study about the next realm of the earth, that is biosphere, that is also known as the sphere of life. Thank you for watching the video.